friends, welcome to QLS Academy. I am your maths faculty and this is the second session of the topic quadrilaterals, in which we will be studying about some properties of parallelograms and understanding the concept more properly by solving some problems. So let us proceed. I hope you will enjoy. So friends, first of all, let's recall what is a parallelogram. A parallelogram is a simple, non-self-intersecting quadrilateral with two pairs of parallel sides. The opposite or facing sides of a parallelogram are of equal length and the opposite angles of a parallelogram are of equal measure. I hope you guys remember. So now let us proceed towards our topic, properties of parallelogram. So these properties are studied in the form of theorems. Let's proceed towards the first theorem. Our first theorem says that a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Diagonal meaning वो लाइन जिससे हम opposite corners को join करते हैं. So ये थ्योरम कहती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पैरेललोग्राम को दो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं. अब ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है. लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो प्रूफ ये कहता है लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम एंड AC बी ए डायगोनल. एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने, उसे नाम दिया ABCD, उसके ऑपोजिट कॉर्नर्स A एंड C को ज्वाइन किया तो हमें मिला डायगोनल AC. Observe that the diagonal AC divides parallelogram ABCD into two triangles, namely triangle ABC and triangle CDA. Now we need to prove that these triangles are congruent. So in triangle ABC and triangle CDA, note that BC is parallel to AD and AC is a transversal. So angle BCA is equal to angle DAC as it is a pair of alternate angles. Also, AB is parallel to DC and AC is a transversal, so angle BAC is equal to angle DCA. Again it is a pair of alternate angles and AC equal to CA is a common side. So triangle ABC is congruent to triangle CDA according to the ASA rule, that is angle side angle rule, or diagonal AC divides parallelogram ABCD into two congruent triangles ABC and CDA. So friends, इस थ्योरम से हमने ये समझा कि पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल मीनिंग उसके दोनों डायगोनल्स में से कोई भी डायगोनल को अगर हम कंसिडर करें तो वो पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में या दो इक्वल ट्रायंगल्स या कहो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. सो विल कीप दिस इन माइंड. पैरेललोग्राम प्लस डायगोनल इक्वल टू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम. सो फ्रेंड्स, इस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मीनिंग एक पैरेललोग्राम के जो दो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स होते हैं, दोनों पेयर्स में दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं. मतलब सपोज हमारे पास है एक पैरेललोग्राम ABCD, ठीक, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA. अब ये हम कह तो रहे हैं पर प्रूफ के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो अब हम प्रूफ भी देखते हैं. अब दोस्तों, हमने इसके पहले वाली थ्योरम में तो ये प्रूफ कर दिया था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो इक्वल ट्रायंगल्स या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. सो फ्रेंड्स, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी तो पता ही है दैट दो ट्रायंगल्स इक्वल या कॉन्ग्रुएंट हुए उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सब इक्वल हो जाते हैं बाय द CPCT रूल. मतलब तुम पैरेललोग्राम ABCD के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को देखो तो AB एंड CD दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हुए, so they must be equal. Similarly, BC and AD भी equal हुए क्योंकि वो दोनों congruent triangles के corresponding sides हैं. Now let's proceed. You already know that whatever is given in a theorem, the same is to be proved in the converse, and whatever is proved in the theorem, it is given in the converse. Thus, the theorem we just proved above can be stated as, if a quadrilateral is a parallelogram, then each pair of its opposite sides is equal. So its converse is our third theorem that says if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Earlier we proved that parallelogram equal to opposite sides equal. Now we have to prove opposite sides equal to parallelogram. So let's see ये कैसे करेंगे हम. Let sides AB and CD of the quadrilateral ABCD be equal. That is AB equal to CD and also AD equal to BC. Next, draw diagonal AC. So clearly triangle ABC is congruent to triangle CDA because two pairs of sides are equal and a diagonal acts as the common side. Therefore by the SSS rule, side rule, both triangles are equal. So now by CPCT, angle BAC is equal to angle DCA.
and angle BCA equal to angle DAC. So the opposite angles are equal. Basically हम अगर एक एडिशन परफॉर्म करें एंगल BAC प्लस एंगल DAC तो ये हमें इक्वल मिलेगा एंगल BCA प्लस एंगल DCA के. सो हमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम. नाउ अगेन वी कम टू प्रूविंग अ कन्वर्स. अभी हमने क्या प्रूव किया? इक्वल ऑपोजिट साइड्स इक्वल टू पैरेललोग्राम. एंड ये हमने पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के किया? दैट उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो अब हम आते हैं कॉन्वर्स पर. दैट इफ द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन प्रूव दैट इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Now using the angle sum property of a quadrilateral and the results of parallel lines intersected by a transversal, we can see that the converse is also true. Meaning, suppose we have a parallelogram ABCD where angles A plus B plus C plus D is equal to 360 degrees. Now a diagonal is drawn, BD. So BD divides angle D and B in equal parts or angles. Now we know that a transversal between two parallel lines gives equal alternate interior angles. तो इससे हम कह सकते हैं that angle ABD is equal to angle BDC and in the same manner हम ये भी बोल सकते हैं that angle CBD is equal to angle ADB. अब guys हम ऐड करते हैं सेम साइड वाले एंगल्स को. अब हमें पता है that इक्वल एंटिटीज़ में इक्वल एंटिटीज़ ऐड करने पे सम इक्वल मिलता है. सो हम ऐड करेंगे एंगल्स ADB प्लस BDC एंड ABD प्लस CBD एंड ये दोनों सम्स इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. सो नाउ वी कैन से दैट angles are equal. Now we also know that if the opposite angles are equal, then the quadrilateral is a parallelogram. अब friends, let's proceed towards another theorem that says that the diagonals of a parallelogram bisect each other. इसका ये मतलब है कि दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स या हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय ड्राइंग अ पैरेललोग्राम एंड ड्राइंग इट्स डायगोनल्स. नाउ मेजर बोथ द हाफ्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स. नाउ आफ्टर मेजरिंग यू विल ऑब्जर्व दैट AE equal to EC and DE equal to EB, where E is the center point or midpoint of the diagonals. Again we have to follow the converse rule and prove the converse of this theorem that we just proved. The converse says that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. Let's see how we can prove this. Again we consider the figure we used for the previous proof. It's given that the diagonals bisect, which means that it is given that AE equal to EC and DE equal to EB. Now the angles AEB and DEC are also equal as they are vertically opposite angles. So by SAS rule we can say that the triangles AEB and DEC are congruent or equal. Thus the sides AB equal to DC. In the same way we can tell that AD equal to BC. Thus as opposite sides are equal, therefore the figure is a parallelogram. So these were all the theorems we needed to know. Now we shall have a quick review of the theorems and then we shall see some problems. First theorem was that the diagonals of a parallelogram divided into two equal parts or two congruent triangles. Second theorem said that in a parallelogram opposite sides are equal. Third theorem stated that if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Fourth theorem was that in a parallelogram opposite angles are equal. And fifth theorem said that if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. Sixth theorem said that the diagonals of a parallelogram bisect each other. And finally the seventh theorem said that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. So this was all for this session. हमने बहुत से theorems देखे about a parallelogram and these theorems will later help us solving various types of problems. I hope you enjoyed learning about the properties of a parallelogram. We shall continue further in our next session where we will learn to solve some problems based on the properties of a parallelogram, that are the theorems we just learned. So for any queries information, you may visit the link following the video. Thank you.